Our next question is Fibonacci number, which is LeetCode 509 question. And now let's see the question. We have to given a problem that's nth Fibonacci number, and हमें nth number find करना है. And we have a formula fn is equal to fn minus 1 and fn minus 2, and n must be greater than 1. So first we see the base cases. f0 की वैल्यू 0 दे रखी है, f1 की वैल्यू 1 दे रखी है. सब ये पता पड़ गया कि अगर n 0 है तो हमारा रिटर्न भी 0 आएगा, अगर n 1 है तो हमारा रिटर्न भी 1 आएगा. नेक्स्ट इज रिकर्सिव रिलेशन दे रखा है जिसका n ग्रेटर देन इक्वल टू होती है हमारी की पॉइंट्स है ना. अप्रोच ये होती है कि इसमें दो प्रोसेस है, एक रिकर्सिव एक है इटरेटिव. रिकर्सिव मतलब हम डायरेक्ट सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करेंगे कि हाँ ठीक है ये चीज हमारे को पता है, लेकिन हमें रिटर्न में क्या चाहिए, ये फॉर्मूला डाल के आप हमें आंसर दे दो. ठीक है, ये अप्रोच ठीक है, बट इतनी भी ठीक नहीं है क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो की पावर मतलब 2 की पावर n हो जाएगी. बिकॉज हम इधर ना कोई वेरिएबल ले रहे हैं, ये डायरेक्ट पुट भी नहीं करेगा वैल्यू. हमें थिंक मतलब कंप्यूटर को सारा बोलना पड़ेगा कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से वैल्यू रखो, मतलब इसमें ना कोई लूप चल रही है. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है, ये सोचने का प्रोसेस बढ़ा रहा है कंप्यूटर को. बट हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा जल्दी अपडेट कर ले. सो वी यूज इटरेटिव मेथड जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सही है. ये उसका कोड है एंड आई विल एक्सप्लेन द कोड in our code. Now the first process is similar and equals to 0 and 0. Now we take a variable a and b compared to Fibonacci 0 and Fibonacci 1. So a is 0 and b is 1. We start a loop from I equals to 2 because it's greater than 1. Now c is equals to a plus b, and then we shift the value a equals to b and then b equals to c, and at last we got return b. Now there are so many doubts from you that minus 2 and b is equals to I equals to 1, I minus 1, and the c is a temporary variable. Let me always contain the latest. And a b is taken because it's always contain the latest Fibonacci number. Now why loop for 2? 2c will start with because it must be greater than equal to 2, and why return b because it's hold b at the last point. We can see in the example that 0 and 1, then this 1 goes to b place and b value goes to a's place. Then this comes and at the last point we get the updated b. So that's why we return b. Now the time complexity is big O and because only single loop takes place, इसलिए big O and space complexity big O क्योंकि only 3 variables use हुए. That's why. So this is our Fibonacci number nodes, and if you want to see the code, let me explain it. Let's solve the question. N equals to 0. We get return 0. If the value is 1, then we get return 1. Now we start 9. We take two variables, int a is equals to 0 and int b is equals to 1. It's f0 and f. Now starting the loop equals to 2. I should be less than equals to n, I plus plus. Now the third variable is c, which equals to a plus b. Switch the value, and the last we get the return, the update value of b. Let's check. Yes, we get the answer. Okay, पापा ने इतना बार करके डांस में पापा ने